Hello everyone, welcome to my channel. I am Shalini Singh, a 4th year BTech student, and you are watching Just Shalini. So today we'll be discussing Leetcode or any other coding platform and how you can achieve a certain number of question goal. The standard is above 300 questions, which is considered a standard number of questions that every coder must be solving in order to achieve a grasp of DSA, data structures and algorithm. So firstly, we will be discussing what we are going to discuss in this video. Firstly, we are going to discuss how I solve these many questions. Secondly, we'll be discussing some reality checks that you get while solving questions at any platform. Thirdly, we are going to discuss what your goals should be while you are targeting to solve certain number of questions, or what your goal should be in general. Fourth, we'll be talking about types of stages of a code. Yes, pick your time. Let's quickly get it. Discuss what coding is. So, coding is basically a way of approaching problems or solving problems by using some knowledge of data structures and algorithm. Data structures are structures in which data is stored, and algorithms govern the type of data structure we'll be using to solve a certain type of problem. So problems come in certain patterns, and for each pattern we have certain algorithms, and for each algorithm we have certain data structures that we will be using. So DSA, or data structures and algorithm, basically govern the way we solve or approach a problem. So this is what coding is. Now people go through many websites to brush off their coding skills so that they can get into big fancy companies like Fang, like Mang, and big four companies, product based companies basically ask you about data structures and algorithm in great depth. So to master that thing, we try to achieve certain number of questions in any platform wherever we are solving the questions. So the first step comes choosing a platform where you will be solving questions. Currently, the most popular platform is Leetcode. That is why I am discussing about Leetcode. If you are comfortable with any other platform, you are free to do that. There is another platform which is Geeks for Geeks. So if you want to brush up your basics, you can start off with Geeks for Geeks and then you can move to It is not that I was totally consistent while solving the questions. There were days when I literally was not solving anything. I have even dropped solving questions for like a month. But before that, I was very much uh, rigorously solving questions, which is good, and everybody should do that. I won't say that I was very much consistent while doing that. Some days I was very good, some days I was not. And I took a course. I took a course which I followed for like 6 months. 3 months they taught DSA and 3 months they taught development. I think many of you must be guessing the course also. So yeah, I took that course, and within 3 months my DSA was over. That course made it over, which was good also, great. And after that I started solving questions rigorously every day, 3 questions. So at a time, I was committed to solving 3 questions per day for like about 3 months. So that gave me a very good push forward in the number of questions I was solving and the pattern that I was dealing. So if I have to give you a rough idea, like some people are very interested in the number game. So if I give you a rough idea, if you are totally consistent for like 3 months, solving 2 questions also or 1 questions also every day, then you will be 100 questions ahead of anybody else. If you are solving 3 questions a day, then some days can be skipped. There is no any issue with that. Also, then you will be solving more than 200 questions. So, which is 3 months is more than enough to complete at least a basic 150 questions is required to decode a pattern, like not a pattern, to decode all the algorithms. So 150 questions is a must.
If you solve one question of each algorithm also and each pattern, you will get 150 plus questions, so that is a must. But 300 questions becomes a standard. So to solve that, I think you should be consistent for at least 3 months. Don't take it as a burden, because forward I'll be telling you how you can achieve that as well. Some reality checks that you will be getting while you will be solving the questions. It's not that nobody gets overwhelmed. Everybody gets overwhelmed. Same was I. I saw so many sheets. Like you can see in my laptop, I can show you guys that I have plenty and plethora of sheets just kept in a folder, that okay, one day I'll be solving with this, one day I'll be solving with that. So there is no issues if you are at that point of time. And आप सोच सकते हो कि DSA is not for me, but it's not true. Everybody thinks that way. You are also thinking that way. If you are not thinking that way, then that can create a problem. But if you are thinking that way, that will certainly not create a problem, because DSA in itself is a subject that can seem very perplexing at times. So yeah, it's very common. I also used to get drawn to every other video which used to tell solve like this, solve like that. That's why I haven't made the video solve like this. It's more about change of mindset, how you can change your approach. Even I took a course, okay, because it was my third year and then I was very much serious. But if you are not taking a course also, you can do it with yourself really good. You can follow the Striver's sheet, but right now I think he has removed many of the videos from YouTube. So just don't get overwhelmed by all of that. There are many videos out there free in YouTube, in net available. You can follow those videos, but just be consistent for 3 months. You will see the results. Be consistent for 3 months. Don't start again. This is the best advice I'll be giving you. Don't start again. डरो अपने आप से कि मुझे वापस स्टार्ट नहीं करना है. टेक इट टू योर ईगो, मुझे वापस से स्टार्ट नहीं करना है. एवरीबडी डज दैट. हम एरे से स्टार्ट करते हैं, वी गो टू ओके स्टैक्स, वी गो टू क्यूज, बच्चों का खेल, वेरी इजी वेरी इजी. वी गो टू लिंक लिस्ट, ओके, नाउ द प्रेशर कम्स, ओके, we don't get good resources, we leave it. Again we come back to array because we have forgotten everything. But if you give 3 months to DSA and you set a goal for every day, today I'll be doing this, today I'll be doing that, I think you will be able to complete. I will be providing my course timeline to you, how they complete. डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा. आप कोर्स भी लिए हो, अगर आप में थोड़ा सा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी का कमी है, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 7 लाख 8 लाख 12 लाख 14 लाख फूक रहे हो अपने इंजीनियरिंग में, तो आप एक कोर्स भी ले लो 7,000 8,000 का, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा है. आप फिज़िक्स वाला का कोर्स ले लो, सबसे ज़्यादा सस्ता है. बट कोई भी कोर्स लो तो ये सोचो मेरा पैसा लगा है, मुझे ईगो पे आ गया, अब तो मुझे एरे पे वापस जाना ही नहीं है. एरे से स्टार्ट करूँगा तो सीधा मैं ग्राफ पे ही रुकूँगी या रुकूँगा. अगर आप ये सोच लेते हो ना, तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा. ये जो सच है ना, वो सच है. अगर मैंने भी स्ट्राइवर के शीट से फॉलो किया था. मैंने एरे स्टार्ट किया, मैंने स्टैक्स, लिंक लिस्ट, अरे मैं तो लिंक लिस्ट के भी काफ़ी आगे तक पहुंच गई थी. बट फिर मेरे सेमेस्टर्स एग्ज़ाम आए, तो फिर वो छूट गया. और तब मतलब मेरा उतना क्वेश्चंस ज़्यादा 90 100, बल्कि मेरे कॉलेज में तो किसी का कुछ भी नहीं हुआ था. मेरे क्लास में तो मेरे दोस्त लोग, अरे भाई तेरा 100 हो गया, बट 100 इज़ नॉट इनफ. डोंट वो फूल मत जाने उस बात से कि अरे भाई मेरे दोस्तों का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देयर आर मैनी पीपल जिनका कुछ नहीं हुआ रहता है. बट आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है. अगर इफ़ यू आर टारगेटिंग गुड PBCs, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, तो आपको DSA पे अच्छा ग्रास्प होना चाहिए. और पता है एक और चीज़ है कि अगर आप DSA पे अच्छे हो ना, आप बहुत प्रेजेंट रहोगे अपने सराउंडिंग्स में. आपका एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ रहा है, आप सोचना स्टार्ट करोगे, क्योंकि अभी जो AI वाला टाइम है ना, हम लोग सोचते नहीं हैं. प्रॉम्प्ट डाला आंसर आया, प्रॉम्प्ट डाला आंसर आया. DSA में भी आप वो कर सकते हो, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको समझ ही नहीं आएगा कि AI ने क्या भेजा है. सो आपको सोचना ही पड़ेगा. तो क्वेश्चन भी सोचो खुद से और करो. ओके,
So now the very important part, which I think is types of stages or of a coder or a programmer or a lead code solver. Number one stage is beginner level. When आप पहली बार जा रहे हो लीड कोड पे सॉल्व करने, इससे पहले मैंने आपको बोला बेसिक क्वेश्चंस आप जब प्रैक्टिस मतलब आप जब सीख रहे हो तो आप गीक्स फॉर गीक्स पे सॉल्व कर लो, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट होता है लीड कोड पे भी. बट ठीक है, आप आ गए लीड कोड पे, यू हैव स्टार्टेड सॉल्विंग विथ लीड कोड ओनली, नो इश्यूज. डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय दीज मैनी शीट्स. कोई भी शीट परफेक्ट नहीं है, और सारे देखो 8 ही 10 पैटर्न है जिस पे सारा शीट बना हुआ है. कोई भी एक शीट उठा लो, कोई भी एक शीट. मैं अभी ना एक बिल्कुल ही अनजान इंसान का शीट फॉलो कर रही हूँ जिसका कोई नामो निशान नहीं है. मतलब आप यूट्यूब पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा उस शीट के बारे में. मतलब मेरे को लीड कोड से इन जनरल एक इंसान ने ऐसे ही डिस्कशन सेक्शन में एक शीट डाला हुआ है क्वेश्चन कैटेगराइज करके अकॉर्डिंग टू द पैटर्न्स. काफ़ी अच्छा है, हर पैटर्न के 5 या 4 क्वेश्चन है. तो मैं वो शीट फॉलो कर रही हूँ. अगर आप चाहोगे तो मैं वो भेज दूँ, मतलब मैं वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, यू कैन चेक इट आउट देयर एज वेल. तो यही बात है कि डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय दीज मैनी शीट्स एंड दीज मैनी वीडियोज़. पुराने वीडियोज़ फॉलो करो. एल्गो प्रेप वगैरह, एल्गो प्रेप नहीं, एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत गीक्स फॉर गीक्स, सबसे पहले गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ. अगर आप खुद से प्रिपेयर, इफ़ यू हैव अ कोर्स, वेल एंड गुड, वो लोग आपको शीट भी प्रोवाइड करेंगे, वो लोग आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे. बट इफ़ यू आर डूइंग इट योर सेल्फ, कोई भी एक यूट्यूब चैनल उठा लो, ट्रस्टेड, ठीक ठाक, उसमें देख लो क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, नोट डाउन इट इन योर कॉपी. ठीक है, नाउ स्टार्ट विथ ईच एंड एवरी टॉपिक. ठीक है, हर एक डीएसए का पैटर्न एल्गोरिदम धीरे धीरे करके कवर अप करो. 3 महीने अपने आप को फुल्ली दो, इधर उधर भटको मत कि तुमको वापस से. दैट टेक्स योर कॉन्फिडेंस एवरी टाइम यू गेट बैक टू एरे. सो डोंट ट्राई टू डू. कोई शीट बढ़िया और कोई शीट खराब नहीं है. क्यों मैं बताती हूँ. देखो 5-6 पैटर्न है, ठीक है. बाइनरी सर्च, प्रीफिक्स सम, मर्जिंग इंटरवल, ग्राफ्स वगैरह में हो गया डिस्टेंस फाइंडिंग, डायमीटर फाइंडिंग, ट्रीज में हो गया ये सब. ग्राफ में एल्गोरिदम वगैरह है, दिक्स्त्रा, ये सब. मोनोटोनिक स्टैक, ये स्टैक का है. क्यू का हो गया क्वेश्चन, प्रायोरिटी क्यू का जिसमें आपको इंटरवल्स मर्ज करने होते हैं, ये हो गया. लिंक लिस्ट का, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर. तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, सब लोग सेम ही बताएंगे. इन सब के 4-5 स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, वो जो सारे शीट में होंगे, सारे शीट में. वरना वो शीट जिस शीट में नहीं है ना, आपको मन है तो आप एक दिन लो और आप 5 शीट मिलाओ बैठ के. जिस शीट में आपको सेम क्वेश्चन दिखे, समझ जाना कि ये शीट सही है. ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे दिस तरह के लिए एक आता है बस स्टॉप वाला क्वेश्चन, वो सब में रहेगा. तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए. जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो सब में रहते हैं. तो यू कैन टेक आउट एनी शीट फ्रॉम देयर, स्टिक टू दैट, डोंट गेट अवे विद दैट शीट. कोई अब बोल रहा है कि ये कंपनीज़ की शीट है, मैंने भी करके देख चुकी हूँ, कुछ नहीं होता. कंपनीज़ की 100 शीटें पड़ी हैं मेरे पास, आज ये करूँगी कल वो, कुछ नहीं हो पाता. ठीक है, सो जस्ट स्टिक टू वन शीट, डू दैट शीट, कंप्लीट दैट शीट, देन मूव टू अनदर शीट. उस शीट के भी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किया अभी ढंग से, प्रैक्टिस किया उसके बाद रिवाइज किया नहीं किया. ठीक है, सो डोंट मूव टू शीट्स बैक देन एंड अगेन. स्टेज 2 comprises of the people who know array, who know linked list but half, who know stack, who know queues, but they don't know advanced topics. So I will suggest you, firstly complete all the advanced, because there are many array questions which can be solved by n square time complexity, but that will cause you a TLE and you will be scratching your head, but you won't get the answer because you don't know the advanced topic. Even if you get the answer from ChatGPT, you will not understand the answer only, you will not understand the approach only. Next, stage 3 are the people who are done with DSA, but they are not solving questions daily. Because of this, what is happening is the DSA is getting rusted in their brains. ओके में हो, आप कॉन्टेस्ट सॉल्व करो एटलीस्ट एक क्वेश्चन, उसके बाद बंद कर दो. समझ नहीं आ रहा, बंद कर दो क्वेश्चन, बट सॉल्व करो. क्योंकि वो आपको एक ऐसा एनर्जी बूस्ट देगा ना, ऐसा मोटिवेशन, कि आपको लगेगा एक हफ्ता पूरा अच्छे से सॉल्व करो, फिर कॉन्टेस्ट में आऊँगा तो दिखा दूंगा कि इस बार तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करके ले गया. सो दैट रियली हैपन्स. यू विल बी वेरी मोटिवेटेड. एंड इन दिस नोट आई वुड लाइक टू
finish this video off. I think this video has become a bit long, but I think all the advices I gave you were very practical. You can do that. I would be really happy to know advice from you guys in the comment section, and any video you are expecting me to bring. Much for seeing it till here. Till then, we meet in the next time. Thank you so much.